Hi, Hi, Kavya. Hello, hi. good to see you finally. Yeah, finally, good to see you too. So we have Lokesh Sharma here with us. He's the additional CEO and also the OSD officer on special duty. Nice to meet you. Namaste, Kavya ji. Namaste. How are you doing? I'm good, thank you. How are you? I'm fine, thank you. And thank you for joining in. Oh, it's my pleasure. It's my pleasure. And of course, Himanshu and Nikita there from Bhopal. Okay. Youth Internship program. Okay. Hello. Hi. Hello, Namaste, Kavya ji. Namaste. So, the brief flow of the program will be कि आज World Youth Skill Day है, तो we briefly start with the introduction of World Youth Skill Day. Okay. Then we go to Lokesh sir to understand that how MP is going about the youth's upskilling and reskilling. And then briefly, Shailesh will introduce you as a panelist, and then you can go ahead about the importance of skilling in the life of the youth and what are the various opportunities in social media, and art and the culture is also a part of our internship scheme which we are driving in Madhya Pradesh. So you can tell the role of the youth in art and culture and how this social media and art can create a transformation in this society. Okay. Kavya, after I introduce, I will drive the conversation with you. Thanks to you. Yeah. Oh, good. Okay, are we live? Yes, sir, we are live. ओके सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस डायलॉग सीरीज में, जहां पर हम अपने प्रोग्राम पार्टनर्स और अपने साथ कई सारे ऐसे युवा कलाकारों से, युवा इन्फ्लुएंसर से, युवा एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात करवाते हैं टू अंडरस्टैंड एमपी का इकोसिस्टम और हमारी चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के विषय में। आज 15 जुलाई है 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ने 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के नाम से रिप्रेजेंट किया था, और ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे रिप्रेजेंट करता है करंट चैलेंजेस जो भी युवाओं के कौशल संवर्धन के दिशा में हो रहे हैं, ऐसे प्रयासों को, ऐसे नवाचारों को और उन आवश्यकताओं को जो वर्तमान समय में 21st सेंचुरी स्किल्स के तहत युवाओं को आगे बढ़ने के लिए स्किल्स की आवश्यकता और उसके महत्व को रेखांकित करता है। आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे में हम ग्लोबली यूथ की स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पे बात कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे कौन से नए आयाम डेवलप हो रहे हैं जो युवाओं को उनकी बदलती आवश्यकताओं के हिसाब से कौशल के दिशा में विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसी दिशा में कई सारी सरकारें, कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स अलग अलग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज सबसे पहले हम जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश शर्मा जी। उनसे सबसे पहले हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किस प्रकार से युवा स्किलिंग, यूथ स्किलिंग के क्षेत्र में क्या काम कर रही है। एंड देन वी हैव आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट शैलेश सिंघल जी और काव्या अजीत जी, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। पर सबसे पहले जानते हैं कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे मध्य प्रदेश का विश्व के नाम क्या संदेश है। ओवर टू यू लोकेश सर। थैंक यू हिमांशु। वैसे तो जब स्किलिंग की बात आती है तो हम लोग अपने फ्यूचर को, प्रोफेशनल करियर को बिल्ड करने के लिए रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर साल में एक ऐसा दिन आता है जब हम उन सारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले सभी जनसेवा मित्रों को मैं आज शुभकामनाएं देना चाहता हूं वर्ल्ड स्किल्स डे के मौके पर, और उन लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि जितना एफर्ट उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में, ताकि उनका ब्राइट फ्यूचर, प्रोफेशनल करियर का एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो सके, उसके लिए भी उन्हें खूब खूब शुभकामनाएं। बात करते हैं तो प्राइमरली जो डिस्कशन में रहते हैं वो वोकेशनल स्टडीज रहते हैं, लेकिन जिस तरह का परिप्रेक्ष्य में बदलाव आया है, जिसमें आप देखें तो वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ वेरी ऑफ्टन चेंज, जिसमें
नई तरह की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, नई तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो बहुत डिस्ट्रप्शन है वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो जो ट्रेडिशनल स्किलिंग का एस्पेक्ट था उसको धीरे धीरे गवर्नमेंट्स ने भी सोचना शुरू किया, और मध्य प्रदेश उसमें काफी कदम आगे है। यहाँ पर उन्होंने अपनी अप्रोच को रीओरिएंट किया। इस दौरान ये समझ में आया कि जो बेस्ट स्किलिंग है वो इंडस्ट्री लेड प्रोग्राम्स के थ्रू हो सकती है, बिकॉज जॉब मार्केट वो अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि किस तरह का स्किल उनको अपने एम्प्लॉयज में चाहिए, किस तरह का प्रोफाइल उनको चाहिए। तो पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश सरकार यही कोशिश कर रही है कि किस तरह से अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो यूथ है उसको क्लोज लाया जा सके, उनको पास लाया जा सके, उनका किसी तरह से फॉर्मल एंगेजमेंट कराया जा सके। इसी दिशा में जो चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हुई, जिसमें ये ध्यान में आया कि डेवलपमेंट सेक्टर एक बड़ा पॉसिबिलिटी है जॉब्स के लिए यूथ को। तो सरकार ने ये इतना बड़ा कार्यक्रम का प्रारूप बनाया, उसको रोल आउट किया, जिसमें मध्य प्रदेश से 5000 बच्चे, लगभग 4700 बच्चे जो है उनको मौका दिया गया एक वेल लेड डाउन प्रोसीजर के थ्रू कि वो लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, ताकि उनको वर्किंग स्किल्स का एक्सपोजर मिले। पहला, दूसरा, साथ साथ उनको ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की सुविधा दी गई, ताकि वो अब जब जॉब मार्केट के लिए तैयार हों तो उनका जो सीवी है, जो उनका कैंडिडेचर है, वो स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन ये सरकार की पहली पहल थी जहां पर उन्होंने डेवलपमेंट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए सरकारी तंत्र का उपयोग किया, और 4700 युवाओं को पहले बैच में मौका दिया, और 4700 को अब दूसरा देंगे, और इसी तरह से तो तीसरा, चौथा जो बैच है वो भी अगले साल भर के अंदर आएगा। लगभग 20,000 युवाओं का एक ऐसा टैलेंट पूल तैयार हो गया, जिसमें एनजीओ, कोजाई गवर्नमेंट बॉडीज, सरकारें, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट होंगी उससे। दूसरा जो बड़ा एम्प्लॉयमेंट का साधन है वो इंडस्ट्री है। तीसरा सरकार है। तो सरकार ने अपने यहाँ भी लगभग 1 लाख नए पद पे भर्तियां शुरू करी, लगभग 65,000 पे हो चुकी हैं। ऐसा टारगेट है सरकार का कि अगले 2 महीने में 1 लाख पदों पर भर्तियां पूर्ण करें और 50,000 नए पद लेकर आए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है और इंडस्ट्रीज भी है। सरकार हर महीने एक ऐसा रोजगार मेला ऑर्गेनाइज करती है जिसमें लगभग 2.5 से 3 लाख युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सब्सिडाइज लोन मुहैया कराया जाता है। तो साल भर में अगर आप देखें तो तकरीबन 30 से 35 लाख लोगों को ये लोन दिया जाता है, और उसकी बड़ी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। लोग छोटे छोटे अपने काम शुरू कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं। उसी को एक बड़ा नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए सरकार ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आए। तो आप देखिए तो धीरे मध्य प्रदेश में लगभग 2,500 स्टार्टअप्स हो गए हैं पिछले 2.5 से 3 साल में, और मध्य प्रदेश देश में एक एपिक सेंटर बनते जा रहा है, खासकर इंदौर। तीसरा ये कि इंडस्ट्री में जॉब के लिए किस तरह का स्किलिंग ओरिएंटेशन किया जाए, तो सरकार ने, मुझे लगता है, दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप स्कीम को रोल आउट किया, जिसमें 1 लाख बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई, जिसमें अप्रेंटिसशिप जो है वो इंडस्ट्री देगी, लेकिन उनका जो स्टाइपेंड है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो जिसमें इंडस्ट्री और यूथ दोनों को ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 20% अपने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ का रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस अप्रेंटिस ले सकते हैं इस स्कीम के तहत, और उन्होंने लगभग 600 अलग अलग जॉब रोल्स की अपॉर्चुनिटीज को एक पोर्टल पर, एक मार्केट प्लेस पर डाला, जहां पर मैच मेकिंग हो रही है। तो युवाओं के पास एक ऐसा साधन है, एक सिंगल इंटरफेस है, जहां पर जाके वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से उन 600 मॉड्यूल्स में से चूज कर सकते हैं, और कौन सी इंडस्ट्री में वो जाना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं, और वहां से उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू होंगी। ये लगभग साल भर का प्रोग्राम है, जिसमें इंडस्ट्रीज इन बच्चों को खुद ऐसी स्किल्स देंगी ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन वहां हो जाए, और जिस कंपनी में वो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वहां पर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा हो। वहां नहीं होती है तो उसी तरह की सिमिलर कंपनी सेम इंडस्ट्री की उनको ऑब्जर्व करेगी। ब्रॉडली मुझे लगता है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है स्किल्स को लेके। इसके साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, आईटीआईज हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, उनको भी सरकार ने स्ट्रेंथन करने का काम किया। मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य जहां पर एक ग्लोबल स्किल्स पार्क
का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक समय में लगभग 6 से 7 हजार बच्चे वोकेशनल स्टडीज और नई एडवांस इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं उसमें बहुत ही एडवांस लैब्स में एडवांस करिकुला में सभी लोग स्किलिंग की और इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज की ट्रेनिंग ले पाएंगे। उसके साथ साथ 10 बड़े रीजनल आईटीआईज जो उनका अगर आप सेटअप देखेंगे तो एडवांस इंजीनियरिंग कॉलेज की जैसी लैब्स होती हैं, उस तरह की लैब्स को क्रिएट किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये नेटवर्क भी बड़ा होते जा रहा है। साथ में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जॉब ओरिएंटेड स्किलिंग को शुरुआत की गई। तो मुझे लगता है कि हर स्टेप पे, हर एस्पेक्ट, हर फ्रंट पे सरकार ने इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, यूथ के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए इतने रास्ते खोले हैं कि यूथ के पास अब एनफ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट सही जगह पर शुरुआत कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एफर्ट की होगी जिसमें वो नई स्किल्स को सीखेंगे, उन स्किल्स के साथ साथ वो अपने करियर को बिल्ड करेंगे, या तो वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे या वो सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होंगी, या फिर वो डेवलपमेंट सेक्टर में जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर, अधिकतर एनजीओज उसमें हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी उसमें काफी काम करता है। तो मुझे लगता है कि पूरा होराइजन एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने कवर किया और पिछले 2 से 3 साल में सारी अपॉर्चुनिटीज को रोल आउट किया गया। तो मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज इस समय हैं और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी वैरायटीज के हिसाब से इनमें से किसी भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इट लुक्स लाइक कि एक बहुत ही प्रोफाउंड कोट है कि एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। मध्य प्रदेश सरकार अपने युवाओं की एबिलिटी पे पूरा भरोसा करती है और साथ ही साथ उसको इनेबल और अपग्रेड करने के लिए प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज को भी प्रोवाइड करती है। आपने एकदम सही कहा कि यहाँ कई सारे एस्पेक्ट्स में और कई सारे डिफरेंट स्टेजेस पे, चाहे आप एजुकेशन में जब पढ़ रहे हो या एजुकेशन के बियॉन्ड जब आप अपना खुद का काम शुरू कर रहे हो या गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हो, इन सारे ही स्टेजेस पे गवर्नमेंट एक बैकबोन की तरह आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ये इंटीग्रेटेड यूथ डेवलपमेंट की जो अप्रोच है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी अन्य राज्यों के लिए और अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ यूथ ऑफ इंडिया से शैलेश सिंघल जी जुड़े हुए हैं, Y20 कंसल्टेशन ग्रुप के भी एक सदस्य हैं। कई सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यूथ स्किलिंग, यूथ अपस्किलिंग, यूथ डेवलपमेंट से जुड़ी बातें रखते हैं और वो आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी लेके आए हैं इस वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे। ओवर टू यू शैलेश जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंडियन मॉडल ऑफ स्किलिंग जो है वो कारगर साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और मुझे लगता है आज लोकेश सर ने जो पूरे चीजों को शेयर किया टू ऑल आवर इंटर्न्स, मुझे लगता है ये दिन आपका दिन है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, अर्थात पूरा विश्व स्किलिंग का दिवस मना रहा है, जो कि आज आप 6 महीने से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, अपने को भी स्किल कर रहे हैं और अपने साथ औरों को भी स्किल कर रहे हैं। And I think with that very larger idea, today, of course, this month we are celebrating another 5,000 more young people coming together in making this program the world's first youth governance model, which is also paid internship model. And of course, last week, we also had Ambassador of Indonesia joining in and endorsing that thought, that how she was happy to be part of the world's first largest youth governance paid internship model. And in the same queue, आज हमारे साथ काव्या अजित जी जुड़ी हुई है। काव्या, if you're here, to all our viewers, Kavya of course comes from the southern part of the country and उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग भाषाओं में गाना गाया है. She's a very recognized and renowned singer in the southern part, Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka, Andhra, Telangana, and so many more. But very recently, Kavya became a very recognized and a popular singer for, I mean, she is a popular singer, but एक गाने के कारण पूरे विश्व ने उनको जानने लगे हैं, वो है अय्यप्पम के ऊपर उन्होंने जब गाना गाया. Of course, काव्या और आज का पूरा एक जो पूरा conversation है, it could be very far different, but art and culture is something which really brings a lot of us together.
and especially with a state like Madhya Pradesh, which embodies the very fact of art and culture and music. Of course, that is a eccentric part of it. If you go to any part of this region, Kavya, if you're here in Bhopal, the art that this region projects, with so many of it, either from Bundelkhand or from Ujjain, is of course will show that how the state has really propagated that message. And with this very idea, I can keep sharing more about what you do, what you are, and how you have really taken an exceptional growth journey. But Kavya, would like to listen more from you, your journey, as in how you started, the hiccups that you faced, and share more about your journey to all our audience who have joined us live on YouTube now. Thank you. First of all, thank you so much for that wonderful, extremely flattering introduction. And happy Youth Skills Day to everybody. And thank you so much for having me here today as one of the panelists. So yes, talking about my journey so far, it is a quite interesting one and very special and dear to me. Music has been a part of me for a very, very long time, since my childhood. I am born into a musical family, and I started learning Carnatic music from my grandmother, Srimati Kamala Subramaniam, whom you probably saw in the video with me, the Ayyappa song. That's my grandmother. So yeah, I started learning Carnatic music from her since when I was, I think, 4 or 5 years old. I was that small. And when, after schooling, during my schooling, when I was in the 4th or 5th standard, I also started learning Western violin. So over the years, schooling happened and parallelly music also happened. But then, like you can imagine, it was just, merely an extracurricular activity. But my passion and fondness for music grew over the years naturally because, myself, my parents, my teachers, all of us had put in so much of time, effort, energy, and money into, my musical skill development. So I just could not let it all go waste. So, and then I went on to do my computer science engineering in Amrita University, Coimbatore. And it was during my college days that I started feeling that, music should now be something more than just a hobby to me, because I really liked it so much. And of course, for all the efforts that people, my dear ones had put in for me, I thought I should make something out of it. And towards the end of my college, I was hoping that I would be able to take up music as a full-time profession. But then again, bummer, my parents wanted me to be an IT professional. So I got placed in Cognizant as a software engineer. And so I very smartly moved to Chennai because, like you spoke about Madhya Pradesh, Chennai is known for its rich cultural and musical tradition. So I thought Chennai was the perfect place for me to be. So I moved to Chennai right after my college because I was employed in CTS. And during the first year of my employment, I desperately tried to strike a balance between my work and music. And, like you can imagine, I terribly failed at it. It was either this or that. I realized it. And at the end of 1 year, I realized that it is now, it is time for me to make the big decision, take the big decision. And I dropped the bomb on my parents saying that I'm going to quit my job and I'm going to be a full-time musician. And oh, I must say that both of my parents are doctors. Okay, so you can just imagine how doctors, think how they want their children to be, all the aspirations they have for their children. And I think I totally broke all that in just one piece of information that I shared with them. And, I told them that I'm going to quit my job and be a full-time musician. So, they were, of course, fond of music, but then they did not see this coming. They did not expect me to, give up a comparatively more a safer and a regular job for an unpredictable field like music. But I did not give them a choice. I did it anyway. I quit my job, and that's how I became a full-time musician. So the interesting part here is that
though I did tell my parents that, I'm quitting my job, all the three of us, the three musketeers, we kept it a secret from the whole of the rest of the family, including my own uncles, first cousins, everybody, because for them, the only daughter of a doctor couple alone in Chennai, has quit her job and is hunting for music opportunities and all that. I thought it would be too much for them to take. So we decided to keep it a secret. And, every time I go home, obviously I would frequently go home because I don't have a job, I'm freelancing. But they don't know that. And they ask me, why are you home so often? You've just started working. You've just started off with your career. And I tell them, I'm one of the best performing employees there. So they give me the liberty to work from home. And poor people, they bought it. So, yeah. So we kept it a secret. We had to, because otherwise it would lead to a lot of, interference and unwanted suggestions. And I could not, I thought it would be too much for me to handle at that point. So, until I was in a much safer place, we thought, it is better to keep it within ourselves. So that's how 8 years back, I became a full-time musician, and the rest is history. I think what you share, it is so much of a journey from two angry faces to becoming three musketeers. एंड बाकी सब भी जो जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको स्किलिंग के बारे में एक चीज बहुत बेखूबी समझ में आ रहा है कि either this or that, there is no middle path in what you want to follow and do it from passion. Kavya, across the last 6 months, 4,695 young women and men are going every day in the morning to the grassroots, to village, to the community level, to the base level, in implementing lot of projects that they feel passionate about their regions. Now, one is historic thing that happened while you were sharing your passion. I somehow feel that I could share the 4,695 young people's passion to you on this very skills day. And it was so lovely to see that this very young people who may not have the best of education in the world, yet were able to make sure that their local roads could get implemented or could be constructed through the local support. And I think that passion can only be seen when you share that either it is this or that. We all of us have to choose between that. And I think that is so lovely to hear from you, to all of you. Yeah. Some of you might think that it was a difficult decision for me to make, but then it was I probably the easiest decision ever in my life, because I hated computer science. And till date, although I've done 4 years of computer science engineering from an esteemed college, if anything goes wrong with the system, all that I would do is press the restart button. That is like the universal solution for all the computer related issues. So that is how much I know about computers. So there was no way I was, going to be a software engineer anyway. And to all our viewers, Kavya's grandmother was also Akashvani All India Radio, which is known an artist as well, and a very recognized and known singer. But of course, we will hear more from Kavya on that. Kavya, because today is World Youth Skills Day, and you somehow also would require certain set of skills in your profession that you have traveled since 2014. Of course, as a child then, but now actively since 2014. What are some of the skills that you feel that may have been required in your profession? And some of the skills that you suggest may be required by young people who are listening to you. Okay, so talking about the skills, I think as human beings, there are some basic skills that we need to have a comfortable, smooth, peaceful life, peaceful journey, be it your professional journey or your personal journey. There are some basic skills that is always that it is always better to have, right? And so I think to name some, it would be self-confidence. I know it is easier said than done, because people will be like, okay, tell us something new, we have heard this 1,000 times. But I must say, self-confidence is like that magical ingredient that you should possess, with which you can solve almost 95% of your problems, be it professional or personal. But mastering the skill, it takes some time and effort, but if you do, I think that's the best thing that you can ever have. So self-confidence, determination, willingness to hard work,
a willingness to work hard, being able to adapt to, different situations and circumstances, humility, and being appreciative of, others' hard work, and recognizing the true worth of the other people. Patience, oh my god, patience, it is, I think it is such an underrated quality, but I think patience is very, very important. I will tell you how these have helped me in my musical journey. When I started off 8 years back, I clearly did not know what I was getting myself into. I did not have a taste of it. I just, in a whim, I just started off. So I did not know how the journey would be. I did not know how my future would look like. But I started off, and if you look at my career graph of the past 8 years, you will see that it has been steadily growing, but very, very slowly. I mean, it is, oh my God, it is as slow as that of a tortoise. So, of course, initially I would get impatient, I would get restless, because I would work so hard expecting results to show up instantly. And that's not how this industry and most of the industries work. I mean, talking about mine, the field that I am in, it is so unpredictable, inconsistent, uncertain, challenging. It throws new challenges at you every single day. And we see rejections and disappointments on a daily basis. So I realized that, okay, now I have to, acquire this new skill, the art of patience. Because, if I let these bitter experiences or negative emotions get to me, that'll mess with, what do I say, mess with my peace of mind. And I think as an artist, what you primarily need is a clear, healthy mind, because that's where all the creativity happens, right? So if I got impatient and desperate and restless all the time, I don't think I would have been able to create anything worthy. So that's when I realized that, okay, now I have to be patient. All that I have in control of would be my own talent. And of course, I can work to better myself, but to be a better version of myself with each passing day, and, give some time for the good things to happen, because it has happened. From my past experience, I would say that for all the hard work that I've put in, I have seen results, but then it has taken some time. So I realized that, okay, there's no point in being impatient. I have to give it some time and things will fall into place. So that's how patience, being patient, has helped me. And self-confidence, I think, what do I say? Okay, so oh my God, I have struggled so much with that particular skill, because I was one of the most diffident people you would ever come across. I never thought I was good enough. I never thought I was worthy of all the appreciation that came my way. So primarily because, primarily because I did not think I was good enough. I would constantly compare. Of course, we are all human beings. We have this tendency deep down somewhere where you compare yourself with other people. But then at one point, I realized that, I had to force myself to believe that we are all actually unique. For a fact, we are unique, we are different, and we are good in our own different ways. And that actually means something. The more you think about it, the deeper it will get. So, as long as there is no other Kavya Ajit, obviously there is no other Kavya Ajit. So as long as there is no other me, there's nothing that I need to worry about. There's nothing I need to be scared of. Nobody's going to snatch away my place. I have, and I also think that there's space for everybody here, right? That there are enough good things to go around, and there's space for everybody. And, that realization gave me a lot of peace of mind. I was like, okay, I am safe here. All that I have to do is go forward in the path that I've chosen. So that slowly helped me become more confident of who I am, what I'm capable of, and what my, what my capabilities are. So, yeah, so these are a few that I can come up with. No, this is... sorry, if I may add, since you are a lot into governance and all that, I was like, when you called me, what am I doing here? I am a musician. I've got nothing to do with it. But thank you for being so honest.
Yeah, I have to be, I have to speak from the heart. So I was like, oh my God, what am I going to talk about today? We are so different. I've got literally nothing to do with governance and, leaders. And then I thought, well, as different as we may seem, we are actually quite similar in a lot of ways. Like, for example, just like how I spoke about how uncertain and challenging my industry is, same is the case with politics also. I mean, it is equally difficult and unpredictable and uncertain, and I think it is these same set of qualities that will help those people to make it to the top, to uh, pivot through their obstacles. So yeah, I thought so we're quite similar, so it makes some sense that I'm here today. Your presence here makes a lot of more sense, Kavya. In the past week, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan ji, also met a very famous musician and discussed on how he can really create that atmosphere and environment of music and culture in the region and the state. And I think that is exactly what statesmanship or leadership or politicians require to do. You have your own best set of qualities. It is only enabling that environment and creating that ecosystem altogether. And that is exactly what Madhya Pradesh has been doing. We invite you on behalf of the entire Chief Minister's Youth Internship Program, the state of Madhya Pradesh, whenever you visit next. But Kavya, thank you so much for sharing on what you talked about: self-confidence, determination, humility, gratitude, and more patience. I think Harivansh Rai ji Bachchan's very famous 2 lines, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And exactly those 5 qualities that you mentioned can be articulated in those 2 lines. And it is the previous sages that have time and again, and the great people like them have really mobilized and shared that these are the same set of qualities that every individual and human being requires. Right. But Kavya, while you are here and you are best at, as you said, from your heart, you have to speak, but you not only speak, you also connect with your music. And the very recent, of course, the Hari Varanasam, if I can pronounce that rightly, it became something that is recognized all across the world, especially on Ayyappa. So, for all our viewers here as well, it is also the month of Shiv, and when you talk about Hari's Ayyappams, maybe some of the lines, if you don't mind, helping all our viewers to also get into that spiritual, devotional mood that you have led the entire world into. Definitely. Why not? Harivarasanam Vishwamohanam Haridadishwaram Aradhya Padukam Harivimardanam Nityanartanam Hariharatmajam Devamashraye Sharanamayappa Swami Sharanamayappa Sharanamayappa Swami Sharanamayappa Sharana Kirtanam Shaktamanasam Bharana Lolupam Nartanalasam Aruna Bhasuram Bhutanayakam Hariharatmajam Devamashraye Sharanamayappa Swami Sharanamayappa Sharanamayappa Swami Sharanamayappa. This is fabulous. We were just getting into, I was getting into the, but thank you so much. This is, I don't have any words to say anything on that, Kavya. But before we hand it over back to Himanshuji, would you have any final message for all the Chief Minister's Youth Internship Program, and how do you find this program? Oh my God, yes. I should have spoken about it earlier. So I did go through the document, and I was very, very impressed, by the initiative that the Madhya Pradesh government has taken. It's such a huge initiative, and I understand that you are providing
exposure. You're providing the youngsters exposure to the development sector through an actual professional working environment. Am I right? Yeah. So yeah, and also giving them a stipend. I mean, that is an actual attraction here, because however small or large the money is, when they are paid, they tend to become more responsible. They tend to become more serious in whatever it is that they are doing. So I think it is such a wonderful initiative. And what comes to my mind is that when I started off as a full-time musician, it is that real life experience that taught me a lot of things. I mean, there is no better teacher than real life experiences. When life throws challenges at you, you come up with strategies to overcome it, and it opens up a whole new perspective on life. So I think this is precisely what the youngsters of today need. I mean, all of us are so used to loading ourselves with or acquiring theoretical knowledge, right from our school days. Over the years, you acquire so much of theoretical knowledge, and when there comes a point when you have to actually apply it, a lot of us fail there. You don't know how, when, what to. So I think an exposure, an actual exposure to the working environment is just what the people need. And all the best to the entire team. And yes, and do you ask me something else? Did you? No, this is perfect. You have covered everything so well. Okay. Kavya, thank you so much for the encouraging words for everyone at the Chief Minister's Youth Internship Program. Of course, it is my never honor to be here. It is never learned till you experience it. And thank you so much, Kavya, for the devotional music that you shared. Himanshuji, over to you. You asked for it and I had to. Thank you so much, Sailesh. Thank you so much, Kavya ji, for being with us in the occasion of World Youth Skill Day. हमारे सारे 4,695 जनसेवा मित्र जो इस समय आपको देख रहे हैं, उन सभी की तरफ से आपके इस ब्यूटीफुल इंसाइट्स के लिए, और आपने जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, वो भी हमारे प्रोग्राम का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है कि किस प्रकार से हम हार्ड स्किल्स के साथ साथ ये सॉफ्ट स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, ये हम कैसे इनकलकेट कर पाए अपने सारे यूथ के साथ। मुझे लगता है आज के पूरे सेशन से हमें 3E बहुत ही इंपॉर्टेंट मिले हैं। पहला ई है एजुकेशन का। आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो भी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सेल करना चाहते हैं, उस सेक्टर, उस पर्टिकुलर डोमेन में आपको अपने आप को एजुकेट करने की आवश्यकता है। देन सेकंड आता है एक्सपोजर। जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में बेसिक एजुकेशन होने के बाद, जो कि फॉर्मली आप अपने इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं और इनफॉर्मली कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। यूथ ऑफ इंडिया भी एक प्लेटफॉर्म है। हमारे कई सारे प्रोग्राम पार्टनर्स है जो कई सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं हमारे यूथ की अपस्किलिंग के लिए। तो उन कोर्सेज को भी एक्वायर करके आप अपना एक एक्सपोजर बिल्ड कर सकते हैं। एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप के रूप में, वो एक्सपीरियंस एक फेलोशिप के रूप में, वो एक्सपीरियंस एक पेड जॉब के रूप में आप जरूर ले सकते हैं। एजुकेशन, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस को मिलाकर कहीं ना कहीं हमारे आज के युवा जो है वो कल के एक बेहतर 21st सेंचुरी स्किल्स इक्विप्ड फ्यूचर रेडी सिटीजन बनने की दिशा में आगे जरूर बढ़ पाएंगे। हम जल्दी हमारे जो चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम का सेकेंड बैच का हायरिंग प्रोसेस अब जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। आज शैलेश जी आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं और एक 1:3 के रेशियो में लगभग 15,000 कैंडिडेट्स के पास 50,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन हमें इस बार अपने इस प्रोग्राम के लिए प्राप्त हुई अक्रॉस द 52 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। और इन 50,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस में से 15,000 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। और आगामी 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच ये इंटरव्यू प्रोसेस संपन्न होगा। और उसके बाद जो हमारा एक मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ द ईयर रहता है, सीएम इंटर्न्स बूट कैंप 2.0, उसको लेके जल्दी हम आप सभी के सामने आएंगे। उसका क्या कंसेप्ट रहेगा, इस बारे में आप लोग अपने अपने स्थानीय स्तर से किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे इस बड़े बूट कैंप का एक हिस्सा बन सकते हैं, क्या मेजर अट्रैक्शंस रहेंगे, उसके बारे में जानने के लिए हमारी इस डायलॉग सीरीज से आप सभी लोग जुड़े रहें। पुनः आप सभी को वर्ल्ड यूथ स्किल डेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी स्किलिंग करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल।
Thank you so much, everyone. धन्यवाद. Thank you, everyone. Bye. Thank you.